Fifth one is network layer. Network layer receives data from transport layer. नेटवर्क लेयर जो है डाटा को रिसीव करती है ट्रांसपोर्ट लेयर से. नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग, terminating network connections. It manages the delivery of data from source to destination. Common protocols that are operate at this level are IPv6, IPvX, and X25. Major functions of network layer. First one is logical addressing. Network layer add a header to the packet that comes from upper layer. Upper layer mean transport layer. The header include the logical addresses of sender and receiver. Header में क्या होता है? Logical addresses होते हैं सिर्फ sender और receivers के. Second one is routing. In routing, routers are used to route packets to their final destination and manages best possible route for data delivery from source to destination. इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं. Source and destination. This is the path source send packet to their with the help of router to their best possible route for the delivery of packets to their destination. Next layer of OSI model is data link layer. It receives data in the form of packets from network layer. डाटा लिंक लेयर पैकेट्स को रिसीव करता है फ्रॉम नेटवर्क लेयर से. डाटा लिंक लेयर परफॉर्म 4 फंक्शंस. नेटवर्क लेयर 4 फंक्शंस को परफॉर्म करता है. फर्स्ट वन इज फ्रेमिंग, डाटा फ्रेमिंग. डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम्स ऑफ बिट इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम. डाटा यूनिट्स को फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है. Data packets that arrive from network layer divided into frames. Frames में header and trailer add कर दिया जाता है. Then second function flow control. If the rate of sending data is more than the rate of receiving data, network layer poses a flow control mechanism to prevent this situation. In this situation, sender and receiver manages the speed of transmitting the data. For example, sender has 10 Mbps speed and receiver has 10 Mbps. Flow control by the flow control mechanism, this is control the communication between the two devices, sender and receiver. In the error control data, link layer detects and retransmits lost or damaged frames. It also prevents the duplication of frames. इसको हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. इसमें एक सेंडर and other one is receiver. Sender is sending the frames. If any frame is lost by error control, send the lost data. The fourth one is access control. If 2 or more devices connected to the same link, data link layer determines which devices has control over the link at given time. Next layer is physical layer. Physical layer is the last layer of
OSI मॉडल की लास्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, कन्वर्ट स्ट्रीम्स ऑफ बिट इनटू सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट ओवर द फिजिकल मीडियम। इसमें बिट ऑफ स्ट्रीम्स होती है जिसको कन्वर्ट किया जाता है सिग्नल्स में, देन ट्रांसमिट कर दिया जाता है मीडिया के ज़रिए। मीडिया लाइक कॉपर वायर, ऑप्टिकल वायर और वाईफाई। Common protocols used at this level are IEEE 802, 802.2 and FDDI. Physical layer defines the directions of transmission between two communication devices, either in simplex mode. Device A and device B can communicate in only one direction communication, either half duplex. One device and other device can communicate in both directions but at a time in one direction. Direction of data at time 2. In either it is full duplex mode. In full duplex mode, two devices can communicate in direction of data in two direction at a time. तो होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी।